metabolism is equal to anabolism plus catabolism. Okay, so anabolism is nothing but the synthesis of different complex molecule, and this process will require energy. Okay, so energy consumption will be there in the anabolism, and in the catabolism, breakdown of complex molecule give energy. Okay, so in the catabolism, energy will be released. So metabolism is nothing but the anabolism plus catabolism. So metabolism क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, या फिर उसका सिंथेसिस होगा, या फिर एनर्जी उसमें लग जाएगी, या फिर एनर्जी आपको मिल जाएंगी. ये जो प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. नाउ विल सी द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. So as carbohydrates are very much important and glucose is a central molecule, glucose is a energy fuel of life. So that's why metabolism of carbohydrate is very important to study. So important metabolic pathways for the carbohydrates are nothing but the first one is the glycolysis. Krebs cycle is there, or citric acid cycle is there. Then gluconeogenesis, glycogenolysis, then hexose monophosphation, uronic acid pathway, metabolism of fructose, amino sugars, then mucopolysaccharide. At least this glycolysis is important, very important. Then Krebs cycle is important. Rest of the things are not much important. So you can say gluconeogenesis is also sometimes important. Glycogenesis is important. This hexose monophosphation is also very important. So glycolysis, Krebs cycle, hexose monophosphation, and gluconeogenesis. These four metabolic processes or metabolic pathways, they are important as far as your metabolism of carbohydrate is concerned. तो आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लाइकोलिसिस है, आपका क्रेब साइकिल है, आपका एचएमपी शंट है, उसके बाद आपका ग्लूकोनेओजेनेसिस. बाकी का जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमाइनो शुगर का मेटाबॉलिज्म, या म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मेटाबॉलिज्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीपैट नाइपर. विल सी वन बाय वन. सो ग्लूकोज इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कार्बोहाइड्रेट metabolism. So what is the normal fasting level of blood glucose? So it is nothing but the 70 to 100 milligram per deciliter. So it is a normal fasting blood glucose level. So it is around 5.5 millimole. And liver is considered as a glucose monitor. कि liver में कितना ग्लूकोज है, वो कौन आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज होगा, वो कौन मॉनिटर करता है? लिवर मॉनिटर करता है. लिवर इज कंसिडर्ड एज अ ग्लूकोज मॉनिटर ऑफ बॉडी. What are the oxidative pathways for this glucose metabolism? So that is nothing but the glycolysis, Krebs cycle, HMP shunt, uronic acid pathway, then synthetic pathway. This is the oxidative pathway. Glycolysis, hexose monophosphate shunt, then uronic acid pathway, then Krebs cycle, synthetic pathway like glycogenesis, lipogenesis, non-essential amino acid genesis. First we will see glycolysis. So glycolysis is also known as Embden-Mehrhoff pathway. So glycolysis is also known as Embden-Mehrhoff pathway, and this line is very important. Once they have asked the question, glycolysis is also known as Embden-Mehrhoff pathway. Now we will first see the reactions of glycolysis. So it is a glycolysis. Glycolysis means oxidation of glucose, and this glycolysis occurs in the cytoplasm of cell. जो भी glycolysis के लिए जो भी enzymes लग रहे हैं, या फिर ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल जो है वो कहाँ पे होता है? आपका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसमें होता है. और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? क्रेब्स साइकिल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. So just remember glycolysis, all the enzymes required for glycolysis that are present in your cytosol. Okay. Now see the glycolysis. Now your glucose molecule, that is central molecule. Okay. Now glucose is phosphorylated. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate. So glucose से glucose 6-phosphate बनेगा by the process of phosphorylation. और उसको एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. So glucose is converted into glucose 6-phosphate by hexokinase or glucokinase. That is a phosphorylation step. So there is a phosphorylation of glucose. So glucose का जो 6 कार्बन में वहाँ पे phosphate ग्रुप का एंट्री हो जाएगा, उसको बोलते हैं phosphorylation. यहाँ पे ATP से ADP बनेगा, मतलब यहाँ पे एक ATP कंज्यूम होगा, राइट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6-phosphate विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate बाय फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज और ग्लूकोज 6 आइसोमरेज. तो यहाँ पे ग्लूकोज 6-phosphate का फ्रुक्टोज 6-phosphate बनेगा. तो यहाँ पे भी अगेन ATP कंज्यूम होगा और ADP में कन्वर्ट होगा. नाउ फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसका अगेन फॉस्फोरिलेशन होगा बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज उसका अगेन फॉस्फोरिलेशन करेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। नाउ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, these three steps are primary three steps. Now these three steps are known as energy consuming step. Okay, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है आपको एटीपी के। This onward whatever steps are they are known as energy releasing steps. Now you have fructose 1,6 bisphosphate. Okay, now aldolase will act on this fructose 1,6 bisphosphate. ये जो fructose 1,6 biphosphate है, bisphosphate है, उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये इसका 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसका स्प्लिट हो जाएगा। अभी ये 6 कार्बन एटम का है तो इसके 3 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट विल बी splitted into 2 molecules by the enzyme aldolase. It will be splitted into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Okay, so you will get 2 molecule. आपको 2 molecule मिल जाएंगे, एक तो कौन सा है glyceraldehyde 3-phosphate और dihydroxyacetone phosphate। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग होने के बाद now this dihydroxyacetone phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate, they are interconvertible. Isomerase नाम का एक एंजाइम होता है that will convert dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate। मतलब यहाँ से इसके बाद आपको स्प्लिटिंग के बाद 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अलग अलग, लेकिन बाद में ये dihydroxyacetone फिर से glyceraldehyde 3-phosphate बनेगा। मतलब आपको you are getting 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, right? Now 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Now glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme will convert this glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate. So यहाँ पे glyceraldehyde 3-phosphate का जो 2 molecules है, 2 molecules है, इसका conversion होगा 1,3-bisphosphoglycerate में। एंजाइम कौन सा है? glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। यहाँ पे बनेगा 1,3-phosphoglycerate और यहाँ पे एक NADPH मॉलिक्यूल बन जाएगा। NADPH मॉलिक्यूल बन जाएगा मतलब इसमें ये 1 NADPH मॉलिक्यूल विल गिव यू 3 ATPs, यहाँ पे 3 ATP बन जाएगा। उसके बाद जो 1,3-bisphosphoglycerate है उसका 3-phosphoglycerate बन जाएगा बाय द एंजाइम 1,3-phosphoglycerate काइनेज, यहाँ पे एक ATP बनेगा। उसके बाद जो 3-phosphoglycerate है उसका 2-phosphoglycerate बन जाएगा बाय एंजाइम फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज। ओके, जो है 2-phosphoglycerate उसका कन्वर्जन हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बाय द एंजाइम इनोलेज। इनोलेज विद एंजाइम विल मेक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फ्रॉम दिस 2-phosphoglycerate. Now this phosphoenol pyruvate will be converted into pyruvate by the enzyme pyruvate kinase, and now in this step also you are getting 1 ATP. Now this is a last product, that is a pyruvate. This is the last product of glycolysis. Now from onward यहाँ पे जो पायरुवेट बन गया इसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये पायरुवेट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है मतलब एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटिल को है, ओके, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है दैट विल कन्वर्ट पायरुवेट इनटू एसिटिल कोए एंड दैट एसिटिल कोए विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। अगर वहां पे ऑक्सीजन है तो अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए। Now if there is a absence of oxygen, if there is no oxygen is there, then this pyruvate will be converted into lactate. This pyruvate will be converted into lactate by the enzyme lactate dehydrogenase. Okay, and here also there will be consumed one NADH will be consumed over here because there is a absence of oxygen. Okay, so oxygen अगर नहीं है anaerobic condition है तो उसका lactate बन जाएगा। अगर aerobic condition है तो pyruvate का आपको एसिटिल कोए बन जाएगा, जो एसिटिल कोए आपका बाद में क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाएगा। क्या याद रखना है अपने को, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस तो याद नहीं रख सकते आप। सो ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज एमडेन-मेयरॉफ पाथवे। ओके, सो एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फ्रैक्शन ऑफ सेल एंड अंडर एरोबिक कंडीशन दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुवेट एंड अंडर एनाएरोबिक कंडीशन the product of glycolysis is lactate। ये याद रखना है कि एरोबिक कंडीशन में क्या मिलेगा आपको,
और एनारोबिक कंडीशन में क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आया था जीपीएट। अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुवेट इज द end product and this pyruvate will be converted into acetyl CoA later on. Anaerobic condition, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टेट बन जाएगा. So glycolysis will have different energy and end product of glycolysis is important part. So glycolysis will have different energy and end product depending upon the whether it is aerobic or anaerobic. And this glycolysis is very important for brain because the metabolism, see, glycolysis takes place in the every part of your body and every cell of your body. ये हर एक ऑर्गन का जो सेल होता है, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, आईज का, आपके आरबीसी का, आपके डब्ल्यूबीसी का, हर एक के लिए एनर्जी लग रहा है और वो एनर्जी प्रोवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस. जो एटीपी मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस यूज के साथ. जो बाकी के जो पाथवेज होते हैं आपके क्रेब्स साइकिल या फिर हेक्सोसोमल फॉस्फेटेशन या फिर आपका टीसीए साइकिल या फिर आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, all these cycles or pathways they are not present in all cells, but glycolysis एक ऐसा पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो आपके बॉडी के हर एक सेल में होते हैं. मतलब ब्रेन सेल में होगा, आपका किडनी में होगा, आपका लीवर में होगा, आपका हर एक पार्ट के सेल के पार्ट में होगा ग्लाइकोलिसिस. ओके, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट by enzyme phosphofructokinase, which is an irreversible step and regulatory step in the glycolysis. Regulatory step, irreversible step, and rate limiting step. That is a conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate by phosphofructokinase enzyme. जो सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है. पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद में फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा. जो सेकंड स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस का, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू द फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ओके, दैट इज अ इरिवर्सिबल स्टेप एंड रेगुलेटरी as well as rate limiting step. And this was question in GPAT 2009, which is a irreversible and regulating step of glycolysis. That is nothing but the conversion of fructose 6 phosphate to the fructose 1,6 bisphosphate by the enzyme phosphofructokinase, right? And what I mean by rate limiting step? Rate limiting step is nothing but the step of reaction which is slowest step in the reaction. जो आपका पाथवे है उसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? ये है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप. स्लोवेस्ट स्टेप जो भी होता है आपका, जो भी पाथवे है आपका, उसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? उसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप. ओके ओके, सो दिस इज अ इरिवर्सिबल regulatory and rate limiting step in the glycolysis. Remember this. This was question in GPAT 2019. ये भी एक बार पूछा था जीपैट में कि कौन सा प्रोडक्ट कब आता है, मतलब पायरुवेट कब आता है, लैक्टेट कब आएगा, अनएरोबिक कंडीशन में पायरुवेट कब आएगा, एरोबिक कंडीशन में. ये मैं रिपीट क्यों बोलता हूँ आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए. ओके, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स, ग्लिसराइडेट 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन बाय द एंजाइम अर्डोलिस. ये आपने देखा है. बाद में क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है. अब नाउ डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट जो है पना है ग्लिसराइडेट 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन, so they will be isomerized to each other, so you are getting 2 molecules of glyceride. Now there are certain compounds which will inhibit your glycolysis, so iodoacetate and arsenate, they will inhibit the glyceride 3-phosphate dehydrogenase. Okay, now this fluoride will also inhibit the enzyme enolase, and that's why fluoride is added in the laboratory estimation of blood glucose level. So if you want to analyze your blood glucose level, they will withdraw blood sample from your body and immediately they will add fluoride in that to inhibit the glycolysis. अगर ऐसे ही glycolysis आपके ब्लड में चलता रहेगा तो you cannot estimate the exact amount of glucose. ठीक है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट करने के लिए फ्लोराइड उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, सो अगेन ऑक्सामेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. जो लास्ट स्टेप है अंडर
anaerobic condition. So the 3 steps catalyzed by hexokinase, that is glucose to glucose 6 phosphate. Okay, then again fructose to fructose 6 phosphate and pyruvate kinase, that is phosphoryl pyruvate to pyruvate. These 3 steps are irreversible in the glycolysis. Glycolysis में 3 स्टेप irreversible है. कौन से? Conversion of glucose to glucose 6 phosphate, जो पहला स्टेप है आपका. Then that is carried out by phospho. Then again से next step जो है fructose to fructose 1,6 phosphate, ये भी स्टेप, ये भी irreversible है. Then again जो लास्ट स्टेप है आपका phosphoryl pyruvate to pyruvate, ये जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप irreversible है. So there are 3 steps which are irreversible in the glycolysis. You have to remember this. Again, inhibition of glycolysis under oxygen. Okay, so inhibition of glycolysis by oxygen under aerobic condition, that is known as the Pasteur effect. Remember, so Pasteur effect is nothing but the inhibition of glycolysis under aerobic condition. ऐसा नहीं कि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूस चलता रहेगा, आपको एनर्जी की जरूरत भी नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी एंड स्टिल ग्लाइकोलाइसिस इज ऑन. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको नीड है तभी वो होना चाहिए. ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है कौन? ऑक्सीजन. ओके, सो कंट्रोल और इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर ऑक्सीजन अंडर एरोबिक कंडीशन इज नोन एज अ पास्चर इफेक्ट. एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, okay, so Pasteur effect, which is due to the inhibition of enzyme phosphofructokinase. Okay, so oxygen will inhibit this enzyme phosphofructokinase. जैसे आपका बॉडी का एनर्जी डिमांड कम होता है तो ऑक्सीजन इसको इनहिबिट करेगा और ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करेगा, क्योंकि आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है. ओके, अगेन Crabtree effect, so which is opposite to that of Pasteur effect. So these two effects are related with glycolysis, Crabtree effect and Pasteur effect. Then again pyruvate dehydrogenase complex will give you 3 ATP and it is inhibited by arsenic poisoning. So glycolysis is the main source of energy for brain, retina, skin and your renal medulla. मतलब क्या कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो आइज का रेटिना है, स्किन है और आपका जो किडनी है, उसके लिए एनर्जी सप्लाई के लिए कौन सोर्स मेन है? ग्लाइकोलाइसिस. वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो उसको एनर्जी मिलेगा. ठीक है, नाउ लैक्टिक एसिडोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट विद डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. ओके, जो भी पेशेंट है उनमें अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में होगा ही नहीं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू एसिटिल कोए, पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट. ओके, एंड लैक्टेट आपको मालूम है, लैक्टेट जो है दैट विल कॉज फटीग टू योर मसल. फटीग होगा उसमें, और जो लैक्टेट ब्लड में अगर इंक्रीज हो गया तो उसका लैक्टिक एसिड बन जाएगा और देयर विल बी लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब ब्लड का पीएच कम हो जाएगा. उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस, तो वो किस में होता है? जो भी लोग होते हैं जिनमें एंजाइम डिफेक्ट होता है. कौन सा एंजाइम? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका, जहां पे भी क्वेश्चन बनता है बोला है. नाउ Krebs cycle. So Krebs cycle is again oxidative pathway for glucose molecule. Okay, so glycolysis में आपने देखा है कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट. तो पायरुवेट जब बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, उसके बाद उसको 2 ऑप्शन है. एक तो उसको अगर ऑक्सीजन है तो वो पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो तो ऑक्सीजन है, पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. और वहां पे NADPH मॉलिक्यूल मिलेंगे 3. वहां पे 3 NADPH मॉलिक्यूल मिलते हैं. वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया है, लेकिन दैट इज अ कनेक्टिंग स्टेप बिटवीन योर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. सो कनेक्शन कैसे होगा उन दोनों के बीच में? जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, जो पायरुवेट बनता है आपके ग्लाइकोलाइसिस में,
उसको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये करेगा और उसका पायरुवेट से एसिटिल कोए बनाएगा और उसमें 3 NADPH मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। मतलब 3 NADPH मॉलिक्यूल मतलब कितने ATP? 980 वो 980 रहेगा। तो वो जो एसिटिल कोए बनेगा, एसिटिल कोए मॉलिक्यूल वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल। तो नाउ सी ये ऑक्सिलो एसिड होता है, ऑक्सिलो एसिड ऑक्सिलिक एसिड मान लीजिए आप, ऑक्सिलिक एसिड ऑक्सिलो एसिड तो ये बॉडी में होता है। तो ऑक्सिलो एसिड will combine with acetyl CoA by enzyme citrate synthetase and there will be synthesis of citric acid or citrate. That's why Krebs cycle is known as tricarboxylic acid cycle. See, tricarboxylic acid. क्यों tricarboxylic acid क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सिलिक एसिड है, इसमें मैलिक एसिड है, इसमें सिट्रिक एसिड है, तो इसमें होगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का साइकिल है। कौन सा है? मैलिक एसिड है, ऑक्सिलिक एसिड है, citric acid. That's why it is known as a tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle is also known as a tricarboxylic acid cycle. It was discovered by Krebs. That's why it is also known as a Krebs cycle. And this is also known as a citric acid cycle. So Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle, or citric acid cycle. These are the nothing but the same. These are the synonyms for Krebs cycle. Now this acetyl CoA, which is formed as a product of glycolysis, will enter into Krebs cycle. Now this oxaloacetate and acetyl CoA will combine together to form a citrate, citric acid or citrate, by the enzyme citrate synthetase. Now again this citrates will be converted into isocitrate by enzyme cis-aconitase. Then this isocitrates will be converted into alpha ketoglutarate by the enzyme alpha ketoglutarate synthetase. Here you will get a 1 molecule of NADH. Again this alpha ketoglutarate will be converted into succinyl CoA by alpha ketoglutarate dehydrogenase. Now you will get succinyl CoA. Here again NADH molecule is released. इस यहाँ पे 3 ADP, यहाँ पे 3 ADP. So succinyl CoA will be converted into succinate by enzyme succinyl CoA dehydrogenase. यहाँ पे there will be again this succinate will be converted into fumarate by succinate dehydrogenase. Sorry, yes, succinate will be converted into fumarate by fumarate synthesis. Then fumarate will be converted to maleate, and then maleate will be converted into oxaloacetate. Okay, and this cycle will repeat it. This is the overview of tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle or citric acid cycle. Now we will see steps one by one. So oxidation of acetyl CoA to the carbon dioxide and water is the central metabolic pathway. Oxidation of acetyl CoA and acetyl CoA to the carboxylic acid, to the carbon dioxide and water. It is a central pathway for carbohydrate metabolism. It was proposed by Dr. Hans Adolf Krebs, and that's why it is known as the Krebs cycle in 1937. And it is also known as the TCA cycle or tricarboxylic acid cycle because 3 carboxylic acid are involved in them. And this TCA cycle, Krebs cycle or citric acid cycle is located in the mitochondrial matrix. It is in the mitochondria, not in the cytosol. So whereas glycolysis कहाँ पे हो रहा था? साइटोसोल में हो रहा था. ये Krebs cycle कहाँ पे होता है? Mitochondrial matrix. ठीक है. Now what are the irreversible steps in the Krebs cycle? So pyruvate dehydrogenase, conversion of pyruvic acid to acetyl CoA, which is a connecting step for glycolysis and Krebs cycle. That is also irreversible step. Then again acetyl CoA synthetase oxaloacetate to the citrate. वो जो है citrate synthetase synthesis of citric acid or citrate from oxaloacetate, that is also irreversible. Then isocitrate dehydrogenase, that is conversion of oxalosuccinate to the alpha ketoglutarate, that is also irreversible. Then ketoglutarate dehydrogenase जो step catalyze करता है, that is conversion of ketoglutarate to succinyl CoA, that is also irreversible. Then again conversion of succinyl CoA to the succinate, that is also irreversible. So you have to take into consideration what are the irreversible steps. Irreversible steps कौन से है Krebs cycle में, वो आपको याद रखना. Again यहाँ पे जो Krebs cycle है उसके लिए क्या लगता है? B complex vitamins लगते हैं. Thymine, riboflavin, niacin, pantothenic acid. These are required as a coenzymes for Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle. So enzymes of TCA cycle and their inhibitors are given in the bracket. Now aconitase का जो स्टेप होता है, that is conversion of
citrate into isocitrate, that is inhibited by fluoroacetate. Then alpha ketoglutarate dehydrogenase का जो step होता है, जो enzyme है, वो that is inhibited by arsenate. Succinate dehydrogenase enzyme is inhibited by malonate. This is known as the feedback mechanism. Then analeprosis or analeprotic reactions. Analeprosis or analeprotic reactions. The reaction concerned with the concern to replenish or fulfill the intermediate of citric acid cycle are known as analeprotic और analeprosis reaction. अगर किसी बंदे में जो इंटरमीडिएट से क्रेब्स साइकिल के जैसे ऑक्सिडाइव हो गया वो नहीं है, और वो नहीं होने के कारण जो रिएक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं एनालेप्रोसिस और एनालेप्रोटिक रिएक्शंस. एनापाइलेटिक रिएक्शंस आर डिफरेंट और ये एनालेप्रोसिस रिएक्शन और एनालेप्रोटिक रिएक्शन ये डिफरेंट है. ठीक है. नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस. व्हाट डू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, neo means new, genesis means synthesis. New glucose synthesis is nothing but the gluconeogenesis. So synthesis of glucose molecule from non-carbohydrate precursors, that is nothing but the gluconeogenesis. मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है कहाँ से? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, जैसे आपका फैट्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया. सो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर is known as a gluconeogenesis. Okay, synthesis of glucose from lipids, amino acids, proteins, that is nothing but the gluconeogenesis, right? Okay, so synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors, that is lactate, pyruvate, gluconic acid, amino acid, propionate, glycerol, that is nothing but the gluconeogenesis. Okay, now gluconeogenesis is exactly opposite to the glycolysis. जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. जैसे जैसे ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स होता है, जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, उसके अपोजिट स्टेप अगर आप करेंगे तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनेओजेनेसिस. सो ग्लूकोज का सिंथेसिस एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसकी. सो अल्कोहल इनहिबिट्स द ग्लूकोनेओजेनेसिस एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो उनका अल्कोहलिक का हैबिट होता है, जो बेवड़े लोग होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता ही नहीं, बिकॉज अल्कोहल इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. सो दैट्स व्हाई अगर जो बहुत ही बेवड़े लोग होते हैं और उनका अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतलब अल्कोहल का अगर उनको ओवरडोज हो गया, तो उनमें हाइपोग्लाइसेमिया होगा, उनमें ग्लूकोज नहीं रहेगा उनके बॉडी. क्यों? बिकॉज अल्कोहल इज अ इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, उनमें ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा. नाउ gluconeogenesis from lactate is known as a Krebs cycle. Just remember, this was the question again in GPAT 17, I think. So Krebs cycle is nothing but the synthesis of glucose from lactate. Okay. Now glycogenesis. Glycogenesis means what? Synthesis of glycogen. Synthesis of glycogen from glucose. And glycogen is nothing but the storage form of. कि glycogen क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है जो स्टोर होता है. कि नहीं, जैसे आपको क्या है, जैसे आप स्टोर करते हो एनर्जी, जैसे आप गेहूं लाते हो दो बोरी या 3 बोरी, लेकिन आप इमीडिएटली उतना खाते होगे नहीं, क्योंकि आपको स्टोरेज करके रखना है फ्यूजन के लिए. सो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट द ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द ग्लाइकोजेनेसिस. सो दैट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन which is acting as a primer for the synthesis of glycogenesis. So glycogenesis will be initiated by a small primer that is known as a glycogenase. Now hexose monophosphate shunt is also known as a pentose phosphate pathway, and it is an intermediate pathway to the glycolysis and TCA cycle. So it is an oxidation of glucose. This pathway is located in the cytosol again. Liver, adipose tissue, adrenal glands, erythrocytes, टेस्टिस, लैक्टिंग मेमोरी ग्लैंड्स. तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लैक्टिंग मेमोरी ग्लैंड्स, आपका आरबीसी हो गया, आपका एड्रेनल ग्लैंड हो गया, एडिपोज टिश्यूज, लिवर, साइट, ठीक है, ये टिश्यूज में हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट ये पाथवे होता है. सो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट और एचएमपी शंट, और इट इज आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. इट इज अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase is the, if there is any defect in the glucose 6-phosphate dehydrogenase, this is the one enzyme that regulate the
HMP शंट विल सी। तो यहाँ पे इतना याद रखो, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट dehydrogenase enzyme will regulate your HMP shunt. Now in the HMP shunt there will be generation of ribose, there will be generation of NADPH, there will be generation of gluconic acid. There are different product of intermediate of hexose monophosphate shunt. उसके इंटरमीडिएट डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बोलता हूँ। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था GPAT 21 रिसेंटली। GPAT 21 में हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, और वो नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, NADPH, उसके बाद राइबोज वगैरह वगैरह। तो बोलता हूँ मैं आपको बाद। सो हियर NADPH सिग्निफिकेंस, जो NADPH बनता है HMP शंट में, is important for phagocytosis in the WBC. Then it is also responsible for the integrity of RBC membrane. Then important in detoxification by your CYP-P450 enzyme. Then HMP shunt is only means for providing NADPH in the RBC. RBC में NADPH जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कौन करता है? Only HMP shunt. Now अगर those patient which are deficient in the glucose 6 phosphate dehydrogenase, मैंने आपको बोला था उसमें हीमोलाइसिस होता है कि अगर पेशेंट में ये एंजाइम डिफेक्टिव है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये एंजाइम जो है रेगुलेट करता है आपका क्या? HMP शंट। HMP शंट क्या करता है? NADPH प्रोवाइड करता है RBC में। अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव है तो NADPH नहीं मिलेगा RBC को, एंड दिस NADPH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। जो रेड ब्लड सेल है उसका मेम्ब्रेन जो है उसका इंटीग्रिटी इंटैक्ट रखने के लिए ये NADPH लगता है, और ये नहीं मिलेगा तो आपका RBC ब्रेक डाउन हो जाए। तो दोज पेशेंट विच आर हैविंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और उनमें कुछ ड्रग देंगे आप, जैसे आपका सल्फोनामाइड्स हो गया, जैसे आपका क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन हो गया, तो ये अगर देंगे तो उनमें क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। फार्माकोलॉजी में देखा था आपने। नाउ पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी डेवलप hemolytic anemia with anti-malarial antipyretic some antibiotic, ये जैसे मैंने अभी रिसेंटली बोला। देन वर्निके-कोर्साप सिंड्रोम, that is alteration of transcriptolase activity. Okay, alteration of transcriptolase activity in the HMP shunt. Transcriptolase is the enzyme, one of the enzyme that will carry a step in the HMP shunt. Okay, so if there is a alteration or defect in the transcriptolase enzyme for the HMP shunt, so that patient may be develop one disease known as Wernicke-Korsakoff syndrome. Okay, Wernicke-Korsakoff syndrome, that is due to defect or alteration in the transcriptolase enzyme. So patient will develop symptoms like mental disorders, loss of memory, partial paralysis, and vitamin deficiency, and this disease is observed in the patient with alcoholic patient or enzyme vitamin deficiency patients, right? Now energetics of glycolysis, this is also very important. This is also one of the favorite topic for the question. So energetics of glycolysis में कितने एनर्जी मिलेगा? क्रेब्स साइकिल में कितना मिलेगा? टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी मिलेगा आपको? So one molecule will give you 38 ATPs. One molecule of glucose will give you 38 ATPs under aerobic condition and 2 ATPs under anaerobic condition. Now in the glycolysis you are getting 8 ATPs. Glycolysis में आपको मिल रहा है 8 ATP. You are getting 8 ATPs in the glycolysis under aerobic condition. Under anaerobic condition you are getting only 2 ATP. Now in case of citric acid cycle you are getting 30 ATP. You are getting a 30 ATP. Now this 30 and this 8 is equal to 38. Means one molecule of glucose will give you 38 ATPs. Is that clear? This was asked in GPAT. Aerobic condition में कितना मिलता है ATP? Anaerobic condition में कितना मिलता है ATP? Now there are different glucose transporters. हमने देखा है carrier mediated transport in the absorption distribution, देखा है आपने प्रोसेस, इसमें देखा है काइनेटिक्स में कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड में आपका ग्लूकोज है, उसको आपके सेल में एंट्री करना है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन के सेल में एंट्री करना है, तो उसके लिए उसको कैरियर्स उसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स दे आर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंटी-डायबिटिक चैप्टर, एंटी-डायबिटिक ड्रग्स, देन इट इज वेरी। सो देयर आर डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। GUL T1,
glucose transporter 1, 2, 3, 4, 5. Now glucose transporter 1, it is located in the brain, kidney, placenta. It is responsible for the uptake of glucose. Means it will give glucose to the brain, kidney, placenta sites. GLT1. Then glucose transporter 2, it is located over the liver, pancreas, beta cells, then small kidney and kidney, small intestine and kidney. Glucose transporter 2 located in the liver, beta cells, small intestine and kidney. So there will be rapid uptake by release of glucose. ये जो ग्लूकोज है वो अपटेक होगा इसमें. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 ब्रेन और किडनी प्लासेंटा में होता है. यहाँ पे भी उसका सेम काम है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 कहाँ पे होता है, वो होता है आपके हार्ट में और स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में. अगेन यहाँ पे भी आपका अपटेक करेगा ग्लूकोज. इंसुलिन स्टिमुलेटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. दिस इज प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड. ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन कैसे होगा इंटेस्टाइन में से, कि ये ट्रांसपोर्टर है, ये आउटसाइड ग्लूकोज जो है वो पकड़ेगा उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल को और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड में लेके. तो ये ट्रांसपोर्टर है और इसको इनहिबिट किया तो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा. अगर ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं ऑब्वियसली. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, राइट. कि आपको ग्लूकोज को एब्सॉर्ब ही नहीं होने देना है या फिर आपको ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन बढ़ाना है. आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, आपके ब्लड में आपको मालूम है शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है. तो आपको शुगर लेवल कम करने के लिए कौन से डिफरेंट वेज है. तो एक तो है आपको शुगर खाओ ही मत. दूसरा है अगर आपने बाय चांस खा लिया तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होने देना, तो उसका एब्सॉर्प्शन बंद करो. कैसे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 को इनहिबिट करो. अगर बाय चांस वो नहीं कर सकते आप तो क्या करो कि जो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाओ, मतलब उसका यूटिलाइज करो उसको, ठीक है. जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल काम करता है उस टाइम, मसल के लिए एनर्जी लगता है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से. ओके, तो उसको यूटिलाइज करो. तो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विल बी इंक्रीज्ड टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल. टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल यू कैन इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट वे. जब आप एंटी डायबिटिक चैप्टर देखेंगे तब बोलेंगे. अगेन ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज देयर, so it is also present in the small intestine and kidney. Okay, active uptake of glucose. Now there are 2 slides, just we will try to finish it. So this glycogen storage diseases, ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो यहाँ पे एटलीस्ट जो डिसीज होता है उसका आप याद रखो ना. वोन गिरके डिसीज, वोन गिर डिसीज. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइप फर्स्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, टाइप फर्स्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है, जो स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का जैसे ग्लाइकोजन, और उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस. सो फर्स्ट वन इज अ वॉन गिरके डिसीज. ओके, सो द डिफेक्टिव एंजाइम इज नथिंग बट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. और इसमें सिम्टम्स हो गए एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, किडनी, फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, टेटोसिस, gouty arthritis, accumulation of glycogen and in the liver and kidney. Second one is a Pompe disease. Pompe disease, it is also because of enzyme defect known as a lysosomal 1,4-glucosidase, or it is also known as acid maltase. अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आपको Pompe disease होगा. Then again Cori disease. So यहाँ पे भी अगर amylase alpha 1 beta 6, यहाँ पे amylase A alpha 1 6 glucosidase. It is a de-branching enzyme. जो branching होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, तो उसके बाद में डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है. इसमें अगर डिफेक्ट होता है तो ये कोरी डिसीज होता है. देन एंडरसन डिसीज इज देयर, ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज. ये ब्रांचिंग एंजाइम, ये ब्रांचिंग, ये डी ब्रांचिंग. ब्रांचिंग डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट है, एंडरसन डिसीज होता है. दिस कोरी डिसीज इज नोन एज फोब्स डिसीज. क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जैसे जिनका नाम फोब्स के लिस्ट में आता है, तो वो बहुत जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो फोब्स की लिस्ट में आते हैं. तो ये मैक्सिमम उनमें ही ये पाया गया है कोरी डिसीज. So that's why it is known as Forbes disease. Little bit funny, but again Anderson disease, it is known as amylopectinosis, and it is due to the defect in the glucosyl 6,4 transferase, that is branching enzyme. McArdle disease, it is also type 5 glycogenolysis. Muscle glycogen phosphorylase enzyme, इसका डिपेंड होता है इसमें. तो ये चार्ट है बुक में, आप पढ़ लो. हर डिसीज है यहाँ पे, तारोज डिसीज है, तारोज डिसीज, ये एंजाइम और उसका पढ़ लो इसको. हाइपोलिपिडेमिया भी होता है, लैक्टिक एसिडोसिस,
hyperuricemia, glycogen storage disease. तो आपको they can ask you which one of the following is not a glycogen, or they can give you the names and they can ask you, for example, her disease is due to the liver glycogen, due to the defect in the liver glycogen phosphorylase enzyme, and this disease is and they will give you option glucose storage disease, glycogen storage disease, or like that. So you must be clear. Now last slide. Defect in galactose metabolism. So classical galactosemia is also known as classical galactosemia. Defect in galactose metabolism means increased blood level of galactose due to deficiency of galactose 1 phosphate urinary transferase genetic congenital disease in the infant. ये बच्चे में क्या होता है, एक डिसीज होता है, उनमें जेनेटिक इनहेरिटेड होता है, वो जीन नहीं होता है उसके लिए. सो देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट इन द चिल्ड्रंस, सो दैट विल लीड्स टू गैलेक्टोसेमिया मींस इंक्रीज इन द गैलेक्टोज लेवल, ब्लड लेवल. सो गैलेक्टोयूरिया. So as there is increase in the blood galactose level in the child, so it will be excreted. So galactouria, accumulated of galactose, accumulated galactose will be converted into galactol. That is nothing but the classical galactomia. Then again, defect in fructose metabolism. So there are three defects: essential fructoseuria, then hereditary fructose intolerance. So essential fructoseuria due to deficiency in the hepatic fructokinase enzyme, essential fructoseuria. Hereditary fructose intolerance due to defect in the aldolase. Then consumption of high fructose resulting in the increase of uric acid level in the blood, leading to gout. Consumption of high fructose is associated with the atherosclerosis. Again, defect in the mucopolysaccharide mechanism. That is these diseases are there. Just ignore it. Now this chart is very important. Focus on this chart. So there was a question in 2019 also. Yeah, there was a question in 2020. Relative sweetness of sugars. कि कौन सा शुगर कितना स्वीट है. वैसे तो सभी शुगर स्वीट ही होते हैं, लेकिन उनका स्वीटनेस वेरी करता है. तो स्वीटनेस इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज असाइंड टू ए अदर शुगर्स विथ रिस्पेक्ट टू स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज, स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज. कि सुक्रोज का स्वीटनेस जो कॉमन शुगर है, टेबल शुगर है आपका, जो केन शुगर है, इसको बोलते हैं सुक्रोज. ये सुक्रोज है आपका, उसका स्वीटनेस लेवल होता है 1. सुक्रोज का स्वीटनेस लेवल होता है 1, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी शुगर का स्वीटनेस लेवल क्या है वो डिसाइड किया जाता है. मतलब रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ अदर शुगर इन कंपैरिजन विद सुक्रोज. सुक्रोज का होता है 1, यहाँ पे दिया है. सुक्रोज का होता है 1, ये इटैलिक में दिया है. क्यों? बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड. सुक्रोज का स्वीटनेस लेवल होता है 1, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी का शुगर का स्वीटनेस लेवल डिसाइड करते हैं. सो लैक्टोज हैज अ 0.16, raffinose has a 0.20, galactose has a 0.32, maltose has a 0.32, xylose has a 0.40, glycol has a 0.50, D-glucose has a 0.74 sweetness, relative sweetness as compared to sucrose. मतलब ग्लूकोज इज लेस स्वीट देन सुक्रोज. ठीक है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है प्योर ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, क्या आपको लगता है ग्लूकॉन डी नहीं यार ये प्योर ग्लूकोज ज्यादा स्वीट होगा? नहीं, वैसा नहीं होता. जो प्योर ग्लूकोज है दैट इज लेस स्वीट देन योर कॉमन शुगर. आपको जो टेबल शुगर है, शुगर केन का शुगर है, आप जो शक्कर खाते हो घर में, जो चाय में डालते हो, दैट इज हैविंग स्वीटनेस 1, उससे कम स्वीट होता है आपका प्योर ग्लूकोज. अभी इन्वर्ट शुगर जो होता है, इन्वर्ट शुगर, सो इट इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज. इट हैज अ 1.23. आपका जो हनी होता है, हनी में इन्वर्ट शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर जो होता है, हनी में नेचुरल इन्वर्ट शुगर होता है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर नहीं होता. Honey is a more sweet than your sucrose. Then fructose is more sweet than fructose is a 1.73 relative sweetness. Now this was all about the natural sugars. Now artificial sweeteners. जो artificial sweeteners यूज करते हैं फूड्स में, टैबलेट्स में, जो सिरप्स में, जो artificial sweeteners यूज करते हैं, उसका स्वीटनेस क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था. So there are different artificial sweeteners. Sucralose sodium. It has a relative sweetness of 30 is as compared to sucrose. ये 30 times sweeter है sucrose से. कौन? Sucralose sodium. Then aspartame. Aspartame is a sugar, amino sugar. It is a amino sugar, aspartame. It is a 180 times more sweeter than sucrose. And this was again a question in GPAT. Then acesulfame. It is a 200 times more sweeter than your stevia extract. It is extract from stevia plant. It is a more 300 times more sweeter than sucrose. Now this saccharin. Saccharin is 400 to 500 times
more sweet than okay. And this was question in GPAT 2020. Saccharine sodium is what is the relative sweetness of saccharine sodium as compared to it is 4000 to 500 times more sweet. तो ये क्वेश्चन GPAT 20 में था, पहला ही क्वेश्चन था, मतलब पेपर जैसे खुला आपका पहला क्वेश्चन ये था, द रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सोडियम सैकराइड इज नथिंग बट द 400 टाइम्स टू 500 टाइम्स देन सुक्रोज. सुक्रोज का स्वीटनेस लेवल 1 होता है, इसका है 400 टू 500. देन न्यू हिस्पेरिडीन डायहाइड्रोचाल्कोन, इट इज 1000 टाइम्स स्वीटर देन मोनेलिन. मोनेलिन इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. सो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बुक में नहीं है, ये चार्ट मैंने कल ही बनाया है, ये बुक में नहीं है या फिर नोट्स में भी नहीं. और इसके बाद में जो ऑर्डर करेंगे उसके पास ही होगा. हाँ, लेकिन ये है बुक में कि सैकराइन कितना टाइम स्वीट है, एस्पार्टम कितना टाइम स्वीट है, ये है स्वीटिक्स पार्ट में. लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री का ये चार्ट है, ये बुक में मिला है मेरे को. मेरे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं और ढूंढते रहता हूँ.